आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारी नजर है विमेंस हेल्थ केयर बिजनेसेस पर। वैसे ग्लोबल फेमटेक मार्केट 2020 में $40 बिलियन का था, जो 13.3% की CAGR ग्रोथ दिखाकर 2025 तक $75 बिलियन तक पहुंचने की क्षमता रखता है। और ये आंकड़े आपको बयां कर रहे हैं कि फेमटेक में कितना पोटेंशियल है नए बिजनेसेस खड़े करने का और उसका सक्सेस रेशियो क्या होगा। वैसे इस स्पेस में फाउंडर्स टैबू टॉपिक्स को नॉर्मलाइज करने में लगे हैं, जहां पर मेनोपॉज, पेल्विक हेल्थ केयर, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, सेक्सुअल वेलनेस एंड एजुकेशन जैसे मुद्दे सामने उभर कर आ रहे हैं और इन मुद्दे और इनसे जुड़े प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी निकल कर आ रहे हैं। 2022 में लॉन्च हुआ फेमटेक इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाउंडर्स, इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स के लिए फेमटेक स्पेस में इनोवेशन, कोलैबोरेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग पर जोर दे रहा है। इस समय फेमटेक का लेटेस्ट सिनेरियो क्या है, बिजनेसेस की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं और अगर यहाँ पर कोई बिजनेस खड़ा कर भी रहा है तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रही हैं नवनीत कौर, जो फेमटेक इंडिया की फाउंडर और CEO हैं। नवनीत, स्वागत है आपका। मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगी, ये फेमटेक इंडिया की शुरुआत कैसे हुई? यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कोविड के बाद हमने देखा डिजिटल हेल्थ का एकदम से इतना ग्रोथ इंडिया में, एंड फेमटेक इज केटरिंग टू वुमेन्स हेल्थ कैटेगरी एंड पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन व्हिच आर मेंट फॉर वुमेन। एंड हमने दो प्रॉब्लम्स देखा। एक तो इंडिया में अवेयरनेस वाज लैकिंग एंड आल्सो कम्युनिटी बिल्डिंग वाज वेरी रिक्वायर्ड, दैट जहाँ पे एक इकोसिस्टम को लेके आया जा सके, बिकॉज ये कैटेगरी बिल्कुल नया है। जैसे हम एडटेक, फिनटेक देखते हैं, उसका ऑलरेडी बहुत सारा अवेयरनेस है इंडिया में एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंड पीपल नो अबाउट दैट कैटेगरी एग्जिस्ट, राइट? सो फेमटेक बहुत नया टर्म था, तो आई रियली सॉ द अपॉर्चुनिटी एंड नीड, आई मीन बोथ थिंग्स, दैट वी नीड टू बिल्ड इन स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम जहाँ पे हम इस कैटेगरी को मोर अवेयरनेस कर सके। एंड आई थिंक देयर वर टू मेजर प्रॉब्लम्स, अवेयरनेस, education, and then second is funding. And through our platform we really try to fill this gap, bringing stakeholders, founders, investors together, so we can better for women's health, we can support the ecosystem. ओके, तो आप बेसिकली इकोसिस्टम को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मुझे एक अंदाजा दे सके कितना बड़ा मार्केट है ये, क्योंकि फेमटेक भले ही भारत के लिए थोड़ा सा नया हो, ग्लोबली इसमें काफी कुछ काम हो चुका है, तो इंडिया का कितना पोटेंशियल है फेमटेक में ग्रोथ दिखाने का और नए बिजनेसेस खड़े करने का? Yeah, India abhi tak, now the market is approximate 1.3 billion, very huge size. अगर हम Indian population देखें 680 million women, and अगर हम उसमें 50% भी target करते हैं तो we are almost like, which is 8.5 world population in India, is a very big market for femtech and women's health need, and I think we need to support that, the ecosystem. And as I said, that जो awareness है, like femtech category starts from menstruation to menopause, supporting women throughout the life, right? So उसमें बहुत सारी category है जिसमें products और services both आता है, and India being a consumer market, and even looking at the population, products also has a huge potential, which could be more of innovative. When we look at the service model, जी, I think what investors and what we are potentially seeking is, because femtech is women health technology, so maybe more solution which are more with AI based, and also making it more accessible and affordable for everyone, not just in tier 1 city but across India. इनफैक्ट ये जो आपने बात की, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली फेमिनिन हाइजीन के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड इट स्टार्ट्स विद द बेसिक ऑफ मेंस्ट्रुअल कप्स, योर सैनिटरी पैड्स एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अगर कुछ उदाहरण हमें दे सकें। कुछ बहुत कोर मॉडल्स निकल कर आए हैं, जैसे कि निर्मय, जो प्राइमरीली AI का इस्तेमाल करके उन्होंने एक बहुत ही लुक्रेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन करता है। इस तरह का कितना काम भारत में हो रहा है?
Yeah, I think they are doing very innovative. Geeta madam, she started this, and the idea was also to make it when we go for breast screening that there's a stigma that women has to go through different process. Someone has to touch your body, so they try to cover that through technology that you have your own privacy and also making it women more comfortable, right? So Nirmaya is doing amazing work with using the power of technology and AI, making breast screening more accessible across India for everyone. And when we look at other parts, there are a lot of other platforms. As I said, we have companies from menstruation to menopause, and there is a lot of work happening, which is more of making personalized healthcare for women, which were not existing before. Even if we look at the old structure, like even in Indian household, that we are very dependent on, that our parents has some gynecologist, or when female is getting pregnant, her in-laws take care of that. So I think now women being in charge of their health, and also being having a freedom, and most of women are working women, and that really fills that gap, making personalized solution for women, which is postpartum care. There are a lot of apps in India who are catering to that, then making motherhood journal better. So how women who is working mother, how she can also prioritize her health and overall her well-being, right? Amazing algorithms that women can actually track their hormones. They can book a consultation no matter where you're sitting. Women can seek therapies also even from their office. So we really, that stigma is the digital gap is like digital health is really filling the gap of the stigma overall healthcare in India, where we feeling little reluctant going to doctor and seeking and thinking, oh, someone's gonna judge me. So I think that's what technology is doing overall. But yes, of course, if we look at IVF as well, that's also one of the growing market in India. If we look at worldwide as well, and we have so many clinics right now, and there are great solution coming in IVF, which is powered by AI, making it patient data more accessible, more easy. So people who are going through the process, and they can use the power of technology. तो clearly options or opportunities कई सारी है. It could be primarily service oriented, it could be app based, it could be hardcore AI जो गीता जी ने किया है. लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स की तरफ से कितना इंटरेस्ट आया है, क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बैक किया जा रहा है, लेकिन फेम टेक की क्या समझ इन्वेस्टर्स में भी बड़ी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? Of course, I think I wouldn't say that, because investor category is male dominated and they are not investing in the category. Of course, I see that all of interest from investors as well. What I feel is, of course, there's less than 2% of funding goes in women's health across the world, not just in India. So I think we need to make business models of women health solution which are sustainable, or even have to do some market validation that okay, this is going to work, because as I said, the category is new, and we need to kind of prove that sector which has a potential if we look at the numbers. But how those digital health solutions are really working in Indian market, because FemTech is still really positioned as a global, because it's whatever working in US might not work in Indian market. So I think there are a lot of culture barriers as well. So investors are also, we see a lot of potential. I personally speak to a lot of people from in even from the venture funds, and everyone's looking to invest, and they're looking at great business model, great market potentials, and I think that's also fair, because investors has LP money and they want to make sure that they potentially invest in founders. They also have to look at returns, right? So overall, as I said, market is growing in and I think now, before after COVID, the funding came in. It was just like lot of funding came in the sector, and that really kind of But this year has empowered been the tough, industry. Navneet. आप agree करेंगी कि this year primarily funding के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है? No, I mean, funding overall has been slow in all the sectors. जी हाँ. I mean, overall, not just FemTech, but FemTech is again
very underrepresented sector, and which is why I would say we still have a long way to go, and that's why community building and awareness is so No, important. which is why we also having this conversation. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी नवनीत इवेंचुअली कि देखिए आप इन्वेस्टर से बातचीत करती हैं, आप ये भी देख रही हैं कि कहाँ पर इनोवेशन किया जा रहा है, कस्टमर रिस्पांस क्या बन रहा है। ये बताइए इस पूरी वार्ता में 2022 में जब आपकी शुरुआत हुई और हम 2023 के अंत में आ खड़े हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या प्राइमरीली वो एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंज है इस समय जो कंपनियां फेस कर रही हैं, जो ये फाउंडर्स फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ और है? I think also we don't have research, right? So research was not typically done on female overall across the globe. So I think what another thing we are also working on is the white papers, that how big is the market is, how to validate your business models and all that, and also market adaptation. As I said, we live in India and there are a lot of culture barriers all over. So वो पार्ट को देखना है कि जो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो यूएस में चल रहा है वो सेम बिजनेस मॉडल इंडिया में नहीं चलेगा, बिकॉज culture barriers, or we have to look at different aspect of India, right? Another thing I also feel is all femtech is really positioned as for niche market, which is tier 1 cities, but I think there's a huge potential. We should definitely look at tier 2 3 cities as well. So I think there are overall factors that which is why the femtech is lacking funding. And I think another thing, as I said, that having a right business model, which is also quite interesting for investors. Not just the market size is big, but how do you validate the market size is very, very important. And I think that's what make it interesting for investor who potentially looking to invest in femtech. नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू, और मैं उम्मीद कर रही हूँ अगली बारी ऑफ कोर्स जब आपका वाइट पेपर जल्द ही निकलेगा और कुछ और डेटा पॉइंट्स हमारे सामने होंगे कि कितना बड़ा मार्केट और किस तरह की और अपॉर्चुनिटीज को हम टैप कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए इसी के साथ हम लेंगे